Good morning, children. We are in 8th class and starting our new subject, Science, in which we shall discuss our first chapter named Crop Production and Management. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 8th क्लास में हैं और अपने नए सब्जेक्ट के साथ हैं, साइंस सब्जेक्ट के साथ हैं। इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो अपने चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है और जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किस प्रकार से फसल उत्पादन होता है और किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन करते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। Chapter 1 Crop Production and Management. Crops, crop seasons, basic agricultural practices, food from animals. मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने साइंस बुक के लिए कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम अपनी फर्स्ट यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट और हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो नेम होगा वो होगा फूड, यानी कि फूड सेक्शन के अंतर्गत हम अपने चैप्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज आवर चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर जिन बिंदुओं को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिन पॉइंट्स को क्लियर आउट करने जा रहे हैं, वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं। क्रॉप्स, फसलें क्या होती हैं। क्रॉप सीजन्स, उन फसलों को उगाने का जो सीजन होता है, किस सीजन में कौन कौन सी फसलों को हम उगाते हैं। और आगे बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि संबंधी जो प्रारंभिक आधारभूत जानकारियां होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, जिनको किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने में और किसी फसल को उगाने में जो प्रक्रिया इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि जो फूड हमें एनिमल से मिलते हैं, पशुओं से जो कुछ भी हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, हम उन विषयों पर भी इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद इन पर बेस्ड ऑन जो हमारी एक्सरसाइज होगी, यानी कि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज होगी, उस एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, क्रॉप्स। Crops. The plants which are grown by man in large numbers to get useful products are known as crops or crop plants. Some common crop plants grown and consumed in India are given in table. Type of crop. Examples. 1. Cereals or grain crops. Rice, wheat, maize, barley, ragi. 2. Fiber crops. Jute, cotton. 3. Pulses, dals or अभी हमने जाना व्हाट इज क्रॉप। नाउ वी आर डिस्कस ऑन क्रॉप सीजन। crop seasons. In India, there are two main crop seasons for cultivating crops. These are known as Kharif season and Rabi season. 1. Kharif crops. These are sown in rainy season from month of June and harvested around October. For example, paddy, pigeon. रिटन इन ग्रीन कलर, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। जो हरे रंग में लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर का मुख्य अंश है। इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। चलते हैं मैम के पास। Irrigation. Seeds need water in the form of moisture to germinate. Plants need water to draw nutrients from the soil for the growth and for making food by photosynthesis. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, the fields should be watered at proper intervals. The watering of crops at different intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation vary from crop to crop, soil to soil, and season to season. For example, the frequency of irrigation in summers is higher due to the increased rate of evaporation of water from the soil as well as from the leaves. Sandy soil needs more water than clay soil. Sources of irrigation.
The main sources of irrigation in our country are rivers, reservoirs, lakes, ponds, wells, tube wells, dams and canals. Water from these sources is delivered by irrigation canals or pumped by using electric or diesel pumps. Traditional methods of irrigation. The following methods of using available water of lakes, wells and canals for irrigation are called traditional methods. These are swinging basket method, moat or simple pulley system, water wheel method, chain pump method, dhekli and rahat or lever system. In all these methods, water is lifted using manpower or animal power. Modern methods of irrigation. Once the water is lifted up, the methods to use the water economically have been developed these days. Two of these methods, sprinkler system and drip system, are given below. Sprinkler system is used where the soil cannot retain water for long or where sufficient water is not available. Rotating nozzles are attached to the perpendicular pipes at regular intervals. Water gets sprinkled on crops as if it is raining. Drip system is an economical method of irrigation. This system is involved providing water drop by drop at the roots of the plants, thus water is not wasted. This system is practiced in regions where the water availability is poor. Weeding. Along with crop plants, many unwanted plants germinate and grow in the fields. These unwanted plants are called weeds. They compete with crop plants for space, light, water and nutrients. They are removed either manually or with a tool called harrow. The process of removal of unwanted plants or weeds is called weeding. Protection from weeds. The chemical substances which destroy or kill weeds but do not harm the crop are called weedicides. Common weedicides are 2,4-D, 2 or 4-dichlorophenoxyacetic acid, NCPA, 2-methyl-4-chloro, 1-phenoxyacetic acid, 3-butachlor, belongs to acetinolide class. Protection of crops. Crops are attacked by rodents or rats and insects like locusts, weevils and termites which eat or damage the crops. They are known as pests. Locusts fly in swarms and eat leaves and destroy vast areas of sugarcane and wheat plantations. Crops are also attacked by bacteria, fungi and viruses which reduce yield by causing several diseases. For example, fungi causes rust and smut in wheat and blight in potatoes. Bacteria cause a disease called wilt in plants. Pesticides. The chemical substances which kill pests without harming the crops are called pesticides. These chemicals are sprayed by using a sprayer or by low-flying aircraft. Chemical control. Insecticides are used to destroy insects. DDT, BHC and menaquin are some examples of insecticides. Fungicides are used to destroy fungi. Sulfur and many copper salts are some examples of fungicides. Rodenticides are used against rodents. Zinc phosphide and warfarin are some examples of rodenticides. Precautions to be observed while using pesticides. While spraying pesticides, the following precautions should be observed. While handling any pesticide, keep your nose and mouth covered. Put on hand gloves. While spraying, position yourself in such a way that the wind blows away from your face, that is, the air coming from your backside. अभी हमने जाना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं, बेसिक प्रोसेस क्या होता है अपनी क्रॉप को अरेंज करने के लिए और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके हमने कुछ तौर तरीकों को भी समझा मैम के द्वारा।
हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने जो है फसलों का रखरखाव करते हैं, किस किस प्रकार के पेस्टिसाइड्स यानी कि दवाओं का यूज करते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। इन सभी चीज़ों को अभी हमने मैम की क्लास में जाना। अब हम सीखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। Food from animals. Humans are dependent on animals in innumerable ways. Animals are a source of food like meat, milk, eggs, and clothing, wool, leather. They help in transportation and also provide company as pets. The keeping of animals for specific purpose is called domestication. All domesticated and useful animals constitute livestock. The breeding, feeding and caring of livestock for food and other useful purposes is known as animal husbandry. The animals domesticated by humans can be divided into the following categories based on the products they. The process of removal of unwanted plants or weeds is called weeding. The chemical substances which destroy or kill weeds but do not harm the crop are called weedicides. The chemical substances which kill pests without harming the crops are called pesticides. The keeping of animals for specific purpose is called domestication. The breeding, feeding and caring of livestock for food and other useful purposes is known as animal husbandry. इस प्रकार हमने जाना कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको किस प्रकार से एनालाइज किया जा सकता है। मैम ने बड़ी ब्यूटीफुली, बड़ी इजियर वे में आपको ये एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है और उसका मैनेजमेंट है किस तरीके से किया जाता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन सेशन के पास, यानी कि एक्सरसाइज के पास डिस्कस करते हैं। गो टू ऑन स्क्रीन, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंटर क्रॉप। नीचे दो हमारे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमारी विंटर क्रॉप कौन सी है। वीट, मेज, पैडी, ग्राउंडनट। वी हैव टू फाइंड आउट। आंसर इज wheat. Wheat is our winter crop. Next question is, which one of the following tools is not used in the preparation of soil? नीचे जो कृषि संबंधी टूल्स दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा टूल है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मृदा को तैयार करने में। मृदा मीन्स मिट्टी को तैयार करने में बुवाई से पहले, सीडिंग से पहले इनमें से किस टूल्स का यूज नहीं किया जाता है। है लेबलर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का यूज नहीं करते। सीड ड्रिल का यूज कब किया जाता है बेटा, जब हमारा जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो चुका होता है, यानी कि हमारा जो खेत है, हमारी जो भूमि है, हमारा जो फील्ड है वो सीडिंग के लिए तैयार हो चुका होता है, यानी कि उसमें बुवाई के लिए वो तैयार हो चुका होता है। उस समय ही हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं, उससे पहले इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। लार्ज स्केल वाटरिंग of plants is called winnowing, transportation, irrigation, germination. Answer is irrigation. Next question. The process of separating grains from the chaff is known as. First is threshing, second winnowing, harvesting, weeding. Think and say what is the answer of it. Answer is threshing. Next and last question is, which of the following is not an agricultural practice? नीचे जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका यूज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में नहीं किया जाता है। हार्वेस्टिंग,
crop production, swimming, afforestation. Answer is afforestation. These are 5 questions based on correct option. यहाँ हमारे लिए 5 क्वेश्चंस दिए गए थे जहां हमें अल्टरनेटिव फॉर्म में टिक करना था कि विच इज राइट अल्टरनेटिव ऑफ द क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन के पास। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज wheat and rice are called ... crops. Second is seed drill is used for ... the seeds. ... crops are sown in rainy season. Fourth, fertilizers are prepared in ... Fifth is before storage, excess ... must be removed from food grains. Now we are going to fill it just now. It is answer of these fill in the blanks. You may understand and complete it on your fair notebook. We will study our rest exercise in part 2. मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो भी शेष बची हुई है उसे हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 में स्टडी करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।